Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are doing well with the spirit. Our course title is Human Computer Interaction, and today's topic is latest technologies of human computer interaction, latest ACI technologies. And today we will discuss cognitive model and cognitive modeling. Today's lecture is really important and also very interesting. जो कि हमारी ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। मैं खुद ये समझता हूँ कि इनका ज़्यादा यूज़ कॉग्निटिव मॉडलिंग में होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा फोकस उस साइड पे होना चाहिए क्योंकि कॉग्निटिव मॉडलिंग इट्स अ हॉट टॉपिक nowadays and we really need it in our life. We really need it. इसका मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ। स्टूडेंट परफॉर्मेंस डिटेक्शन के लिए आपको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की ज़रूरत है और कॉग्निटिव मॉडलिंग की ज़रूरत है। और जो स्मार्ट लॉक सिस्टम वगैरह है उनके लिए जो बैंक सिस्टम है, अब लेट से रॉबरी और इन चीज़ों के रोकथाम के लिए और वहाँ पे उनकी एवेल्युएशन के लिए हमारे पास हमें कॉग्निटिव मॉडलिंग की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर लें और हमारा जो कैमरा है वो इसको इतना इंटेलिजेंट बनाए कि वो उसको यूज़ कर सकें। एंड द सेकंड वन इज़ के if you people have noticed that in interviews sometime a really good candidate has been rejected. So we need that technology over there. Like हमें इन टेक्नोलॉजी की इसलिए ज़रूरत है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा रिजेक्ट भी हो जाए तो उनको कम से कम पता हो, उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हो जाए वहाँ पे इंटरव्यू से, और उनको पता हो कि यार ये जो मेरे स्किल डाउन हुए हैं या जो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ वो मैं इस बेस पे रिजेक्ट हुआ हूँ। उनको प्रॉपरली अपने इमोशंस के बारे में, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में, अपने ईईजी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, अपने साइकोलॉजी के बारे में उनको पता हो कि the camera actually evaluated my personality and my body language, and this decision has been taken on all these factors. So we need cognitive modeling. Basically, we need to model the cognition of a human being. Cognitive abilities, I think you guys all know this. Cognitive abilities, the mental abilities through which we process information, the input or to our brain, and we use it in the form of reasoning, in the form of knowledge. If cognitive modeling is like that. So let's come through proper channel. So here we will discuss some methods, already published technologies, and that is biologically inspired student performance detection. One is that thing, biologically inspired student performance measurement approaches. इसका क्या मतलब है कि वो फैक्टर्स जो कि बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड हो। बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड मीन कि जिस तरह से हमारी बायोलॉजिकल एजिंग है। अब बायोलॉजिकल एजिंग का मतलब यह है कि एजिंग के साथ साथ हमारे बहुत सारे फैक्टर्स उस पर नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट इस पे जाता है। तो उस बायोलॉजिकल एजिंग को हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदे की सिर्फ ईयर्स या मंथ्स इंक्रीज हो रही है। नहीं, बायोलॉजिकल एजिंग के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, आपका एक्सपोजर इन्वॉल्व होता है, और भी बहुत सारे आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑल दीज आर बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड फैक्टर्स. So we will detect the performance of any individual, any students on the basis of biological factors. So one approach is there. So here you will learn something about that method, about that kind of techniques, and then you can explore in detail. You can find a lot of data in Google. You can find a lot of published work and published research paper articles over there. So let's discuss what is cognitive modeling. So to the best of my knowledge and to the best of some
published work, simulation of brain activities. It's called a simulation of brain activities. Simulation का क्या मतलब है? Simulation of brain activities का क्या मतलब है कि हम जो हमारे ब्रेन एक्टिविटी, जिस तरह से हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, उसको हम सिमुलेट करें और उसको हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लेकर आ जाएं, और वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट हो कि वो ब्रेन एक्टिविटीज़ की तरह काम करें और वो हमें आंसर दें। हम एक इमोशनल कंप्यूटर पे काम करें. So the main theme is that. We will discuss in detail later on. Number 2 is simulation of problem solving. How you solve the problem. So you need information. For example, if I am asking you that what is your father name, so you will answer me that that my father name is Ahmad. So if my father name is Ahmad, okay, so how I know that? Because a lot of data has been stored in my memory, so I am using memory for that. And number 3 is simulation of mental processing. So in this mental processing, memory is also involved, imagination is also involved, a lot of things. So we will discuss in detail that also. So cognitive modeling, to the best of my knowledge, is what I have modeled in few, like cognitive modeling. It's a very vast technology, but here we will discuss these 3 things, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, और इसमें फिर अगर आप लोगों ने इन डेप्थ इसको एक्सप्लोर करना हो, then you can go for it. So one is simulation of brain activities, number 2 is problem solving, and number 3 is mental processing. So simulation of brain activities. Here you will have to understand, if you want to work on cognitive modeling, you will have to understand, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ब्रेन एक्टिविटीज़ किस तरह से एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. So you will need medical data, you will need medical expert, you will need psychologists, you will need a verified data from verified data. So who will verify the data? So the particular medical officer, the particular physician, the particular psychologist can validate that yes, you can use this data for the cognitive modeling, and you can model any algorithm, you can model any human computer interaction system, you can model any robot, you can model any emotional computer. But if the data what we are using, if the data is not perfect, is not valid, is not verified, then the model which we have designed will be very poor in design, and it can have many anomalies, many problems, and it will not work like what we want to do. So number 1 is how it processes information, how the brain activities, how the brain process information. So we need to know that. Number 2 is brain electrical activities. When anything is processed, so there is some electrical activities in your brain, and these electrical activities provide waves which is discharge on your scalp. जो आपका स्कैल्प है, खोपड़ी है, इसके ऊपर से ये वेव्स जो है ये डिस्चार्ज होते हैं. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए हम मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी. इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी हम यूज़ करते हैं. और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी किस तरह से वर्क करता है, जिस तरह से हाँ आप लोगों ने अगर कभी ECG की हो, जो ब्रेन जो हार्ट की बीट रेट वगैरह इससे हम मालूम करते हैं, तो सेम ब्रेन की भी EEG होती है. हार्ट वाले उसको हम ECG कहते हैं, और ये जो ब्रेन वाला है इसको हम EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी. सो इन दैट
you will have so what kind of technology you will use electrode for that. इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं, उसको स्कैल्प पे, आपका जो स्कैल्प है, खोपड़ी है, उसके ऊपर रख देते हैं और वो क्या करता है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, ब्रेन में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको कैप्चर करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र होने के बाद हम क्या करते हैं? नंबर 2 इज़ you can go to the brain electrical activities, and in brain electrical activities here you can see capture the signal. You will have to capture the signal through electrode के ज़रिए आप सिग्नल को कैप्चर करेंगे। एंड नंबर 3 इज सिग्नल पैटर्न, और आपको फिर पैटर्न का पता चलेगा कि इट्स अल्फा बीटा गामा थीटा, what kind of pattern is that. So you can find very meaningful information from that particular patterns, very meaningful information. So if you explore EEG, electroencephalography, or emotion detection through EEG in Google, if you put something like that, you can find a lot of papers, a lot of research work have been done. So it's a very interesting area, and you can find a lot of knowledge in that. So ये जो सिग्नल्स हैं, हमारे जो सिग्नल कैप्चर्स हो जाते हैं और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाए, अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह, इससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, और वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे डिफरेंट इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सो हम ये सारी चीज़ें उससे वो कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि ये सिग्नल किस चीज़ के लिए हैं. So you will have to record that pattern in your computer. Number 3 is you will have to record this. जब आप उसको रिकॉर्ड कर लो तो फिर क्या करेंगे, आप उसको उस पर आप डिफरेंट रिसर्च टेक्निक अप्लाई कर लो, उसको देख लो, पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं आप, और डेटा अपने साथ सेव कर लो, वेरीफाई कर लो पहले साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या फिजिशियन के थ्रू, आप उसको वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करने के बाद उसको आप कंप्यूटर में रख दो, और कंप्यूटर में इस पे आप डिफरेंट, क्योंकि एक पिक्चर फॉर्म में होगा, और इस पे आप इमेज प्रोसेसिंग के डिफरेंट टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं. आप उसमें जो सिग्नल पैटर्न्स हैं उसी के मुताबिक आप पैटर्न मैचिंग भी उसमें कर सकते हैं. तो सो in that position everything will be in your hands and you can do what you want to do. So actually you will have to apply different techniques, and you will need some on this position when you do all these things, like you capture electrical activities, you put it in your computer, you break it into alpha beta gamma, और इसके बाद फिर आपका काम जो है, यहाँ से जितने भी ये एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है, जिसको आप साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, ये काम यहाँ पर डन हो गया. आप नेक्स्ट काम आपका है कंप्यूटर रिलेटेड, कि आप उसमें कौन सी लैंग्वेज आप अप्लाई करना चाहते हैं. जहाँ पे जिस तरह से मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि आपके पास आप टूल्स देखें कि कौन सा टूल मैंने अप्लाई करना है इस पर, कौन सा टूल मैं यूज़ कर लूँ, पाइथन में यूज़ कर लूँ विच इज़ रिच इन लाइब्रेरीज, सो और मैं इसमें सी शार्प यूज़ कर लूँ, कौन सी लैंग्वेज में यूज़ कर लूँ, कौन सी मेरे लिए आसान होगी, और इसमें मैं अपना गोल जो है वो अचीव कर पाऊँगा. सो यू विल हैव टू डिसाइड ऑन दिस पोजीशन कि उसके लिए मैं कौन से टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ कर लूँ. सो ये था सिमुलेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज़, कि आप ब्रेन एक्टिविटीज़ को किस तरह से सिमुलेट करेंगे. यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपको दे दिए हैं. आपका काम है कि ये जो मेरा लेक्चर है इसको आप बार बार सुने, आप बार बार सुने, और फिर जो आपके पास जो कन्फ्यूजन्स हैं, अब लेट से मैंने EEG के बारे में बात की, अगर इफ़ EEG इज़ नॉट क्लियर टू यू, यू पुट इट इन गूगल और इन एक्सप्लोर, यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ रिसर्च पेपर, और उसको स्टडी कर लो, फिर दोबारा से लेक्चर पे आ जाओ, फिर आपको EEG का आइडिया हुआ होगा कि EEG क्या है. इसके बाद फिर आप दोबारा से लेक्चर को रीड कर लो, सॉरी वॉच कर लो, और फिर अगर दोबारा से कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको आप गूगल में भी पेस्ट कर सकते हैं. एंड यू विल हैव टू अपडेट योर नॉलेज, और जब आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी तो साथ साथ तब फिर आखिर में लेक्चर की आपको समझ आ जाएगी. तो यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दे दिया है कि आपके पास आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क किस तरह से कर लिया, डेटा
आपने गैदर कर लिया, उसको वेरीफाई कर लिया फिजिशियन के थ्रू, साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, और फिर इस पे आपने डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक इस पे अप्लाई कर सकते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स। इससे फिर आप एल्गोरिथम बना सकते हैं, उसी एल्गोरिथम के हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर रिपोर्ट ऑन विच यू आर वर्किंग। और ये रिपोर्ट ये नहीं है कि बस आपने एक ही दम से फ़ौरन एक इमोशनल रिपोर्ट बनाना है, नहीं, आपने इस पे काम कर लिया तो स्लोली स्लोली और भी लोग उसी में काम करते रहेंगे, एंड फाइनली वी विल हैव ए कंप्लीट इन ए परफेक्ट रिपोर्ट। Number two is simulation of problem solving. So is what I have discussed, that you will have you will need knowledge for solving any problems. For example, if you have any, जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर फादर नेम, then you will answer me that my father name is Ahmad. So how you know that? Because you remember that thing. आपके पास नॉलेज है और इसी नॉलेज के हिसाब से आप मुझे आंसर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई तज्जिया, जो आजकल पॉलिटिक्स के हवाले से डिफरेंट डिस्कशन होती है, वहाँ पे टॉक शोज़ चलते हैं, टॉक शोज़ में आपसे पूछूं कि इस टॉपिक पे आप क्या डिस्कशन करना चाहेंगे, कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो, तो उस पर आप मेरे साथ आप अपना तज्जिया पेश करते हैं, ओवरव्यू पेश करते हैं कि ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। सो मैं आपसे पूछूंगा और आप फिर रेफरेंस दे देते हैं, डिफरेंट उसके रेफरेंस दे देते हैं हिस्ट्री के वगैरह वगैरह उससे। तो इट मीन यू हैव नॉलेज, एंड ऑन द बेस ऑफ नॉलेज यू डू समथिंग, यू सॉल्व सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे भी जो हमारे पास कॉग्निटिव मॉडलिंग है, उसमें हमारे पास नॉलेज जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी नीड दैट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सोल्यूशन के लिए हमारे पास वो ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। जब हमारे पास नॉलेज है देन वी कैन गो फॉर इट, और अगर नॉलेज नहीं है देन वी कैन नॉट गो फॉर इट। और जो नॉलेज, हाँ, जिस नॉलेज के बेस पे आप डिसीजन लेते हैं वो फॉल्स हो सकता है, इसकी एक्यूरेसी 60%, 70%, 80% एक्यूरेसी हो सकती है, इसमें फॉल्स डिसीजन भी आपको दे सकता है, सही है, वो आपको रॉन्ग डिसीजन भी दे सकते हैं, सही है। तो उसमें आपने एक्यूरेसी को देखनी कि मेरे पास एक्यूरेसी कितनी आ रही है। Okay, next is simulation of mental processing. So जिस तरीके से ये सारे जितने भी सिमुलेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, सिमुलेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमुलेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस, इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ पे आप जिस तरह से एक ह्यूमन इमेजिनेशन करता है, जिस तरह से ह्यूमन के पास एक मेमोरी है, तो आप कंप्यूटर में भी इसी के मुताबिक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसी डेटा से डिसीजन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी इमोशंस हैं, अब लेट से आप इमोशंस को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पीसेस, लाइक यू कैन डिवाइड इनटू हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट। सो एंड यू हैव टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस इमोशंस। जब ये सारे इमोशंस के बारे में आप एट द सेम टाइम सारे तो नहीं हो सकते, नो डाउट, सिर्फ एक इमोशन पे काम करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर इमोशन की भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, सही है। जिस तरह फ्रस्ट्रेशन के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, गिव अप है, तो ये एंगर है, तो ये सारी चीज़ें जो फ्रस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। तो मतलब ये है कि एक इमोशंस के आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आप एक इमोशन के बारे में डेटा आप प्रोवाइड कर ले, बट यू हैव टू प्रोवाइड डेटा अबाउट ऑल इमोशंस इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इमोशनल कंप्यूटर। अब इमोशनल कंप्यूटर पे आपका तब परफेक्ट हो सकता है जब आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो। इसके बाद आप इमेजिनेशन करते हैं, जिस तरह से आप बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आप इमेजिनेशन करते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। सेम इफ़ यू वर्क इन ऑन ए कॉग्निटिव मॉडलिंग, then you will have to model all these things. You will have to model your imagination. You will have to add this feature to your emotional robot. So ये सारी चीज़ें आप slowly बहुत सारे features उसमें ऐड कर सकते हैं। And one more thing you will have to keep in mind कि ये शायद कि आपके लाइफ में ये इमोशनल रोबोट फुली कंप्लीट ना हो, शायद कि 50 साल बाद वो एक इमोशनल कंप्यूटर के फॉर्म में हमारे पास एक कंप्यूटर आए।
या 100 साल बाद हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर के फॉर्म में एक इमोशन, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन ब्लॉक्स एक्चुअली. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू just like a labor of constructing building. So इसमें आप कुछ ब्लॉक्स पे आप काम कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे रिसर्चर काम करेंगे और वो रिसर्चर उसी के हिसाब से आपका जो वो है बिल्डिंग है वो कंप्लीट होता रहेगा. So emotional computer is very interesting topic. It's very hot topic nowadays. There is a lot of demand in research community. So my suggestion is to work on that, and you can write good papers, research paper, and you can publish that work in a good journal and good conferences. Thank you so much, dear students. I hope you guys have enjoyed this lecture. Again, अगर आपको कोई issue है, then you can contact me on WhatsApp, and you can also contact me on my email. Thank you so much.